चलो, now we'll do the questions based on the series combination का. So I'll give the circuit, you tell me the answer. Capacitance का units क्या है? Microfarads. So it is 12 microfarads, 4 microfarads, and 12 volts. Okay. It's telling what is C equivalent, Q released from the cell, kitna charge it is released from the cell, and Q on each capacitor and V on each capacitor. Microfarads is the capacitance. C1, C2 is given to you. C equivalent is 3 microfarads. Yes. Q is 36 microcoulomb. Yes. Q on each capacitor, I'm not sure how to find out. देखो series में charge is same. Okay. The total like no series में current is same, right? I say charge is same. So same charge will be entering here. So 36 microcoulomb will be entering here and here. So answer is 36, 36. Dono. Okay. And potential will be distributed, right? Potential will be how much potential? No, find करो. C equal to Q by V, V equal to Q by C use करके solve करो. You got C equivalent, Satvik? Oh. 3 and 9. 3 and 9. दोनों ऐड करो. 12. Which is 12 volts है ना. 3 volts, 9 volts. Series में sum of the voltage drop is always equal to the this battery voltage. Hi Satvik. चलो, understood? Yes. Now आपको क्या है? आपको combination में ज़्यादा questions आएगा. Okay. Now we'll go for the parallel circuit also. Parallel combination of circuits. Parallel combination में one capacitor, second capacitor, and third capacitor. C1, C2, C3, and V. Okay. So here, when you on the switch, देखो when you on the switch क्या होगा? The charge will be flowing here. Charge will be coming here. Okay. Now see here one thing you have to understand in parallel में potential difference is V, right? मतलब one is V, one is 0. Potential I can put like this because potential difference is how much? V minus 0 is V, right? And here one thing you have to understand, total wire में potential is same. So here V volts है, V. Again, until unless any device should not come, like any capacitor, inductor, resistance, then if the V cannot cross that capacitor. Okay. So line में the wire में potential is same. So this is V. इधर तक आया, right? And similarly this is 0 volts. So wire is there 0. The potential is same in a wire always. Now tell me what is the potential difference across this C2? How much? Bolo. Potential difference across C2 is how much? V minus 0 is how much? V. What is the potential difference across C3? V. For C1? V. So that means in parallel what is same? In parallel the potential is same for all capacitors. Okay. And charge तो क्या होगा? Charge आकर divide करेगा. Q1, Q2, Q3 divide हो जाएगा charge. So I can write like this: Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Now our interest is to calculate C equivalent in parallel में. C equivalent we done in series also, right? So C equivalent find करने के लिए मैं क्या करूँगा? I will combine these 3 capacitor as one capacitor. I can call as C equivalent. Okay.
So C equivalent, and this is potential difference V and charge Q. So from this Q equal to C equal to Q by V, Q equal to CV, right? So C equivalent into V. And here Q1 कितना होगा? Q1 is C1 into V, Q2 is C2 into V, Q3 is C3 into V. Now substitute this in this format में, because we want C equivalent. So Q के जगह में C equivalent into V is equal to C, इसका Q1 C1 into V plus C2 into V plus C3 into V. So V common C1 plus C2 plus C3 is equal to C equivalent into V. So V cancel. C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. This is C equivalent. Like आपको ऐड करना पड़ेगा, पैरेलल में इजी है सिंपली ऐड करने का, C1 plus C2 plus C3. कॉपी करो. बेटा C1 plus C2 plus C3. सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद डिफरेंट टाइप्स आर देयर. आपको बड़ा सर्किट्स कंपलसरी एग्जाम में एक सर्किट आएगा कंपलसरी डायग्राम, सो आपको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने का. देखो बिट्स पिलानी, सो मेनी पीपल आर गेटिंग बिट्स पिलानी. यू शुड बी रेडी. बिट्स पिलानी very good if you study in engineering in bits pilani keka copy satik jaleka. No special cases now. If n capacitors of equal capacitance C is connected in parallel, okay, tell me kitna C equivalent kitna hoga? All equal capacitance C so on to n capacitors written. C. What will be C equivalent? N times C. N times C. C plus C is NC. Okay. Okay. Next. Now important points note करेंगे. Equivalent capacitance is always greater than individual capacitance. Suppose मान लो you have 3 capacitance, 6 microfarad, 4 microfarad, 3 microfarad. Okay, they are connected in parallel. What is C equivalent? C equivalent, they connected in parallel, right? कितना 6 plus 4 plus 3 13 microfarads. देखो 13 microfarad is greater than individual capacitance. That's why parallel में C equivalent capacitance is always greater than any of the individual capacitance. First point. Second point, potential on each capacitor is same. This one you know, potential is same in parallel, but charge is divided. Charge ratio, can you tell me? Q1 is to Q2 is to Q3. कितना होगा in terms of parallel में? C1 is to C2 C. Good, because Q1 is nothing but C1 V1, right? C1 V is to C2 V is to C3 V, right? So V cancel. So C1 is to C2 is to C3. मतलब one sometimes they will give the capacitance, they will tell the charge ratio means they had relation in parallel में.
डन ना, 2 3 5 तो C1 is to C2 is to C3 we have to find. चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. फाइंड C इक्विवेलेंट. सपोज मान लो एनी कैपेसिटर इज देयर. 5 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड. मान लो इट्स वोल्टेज 4 वोल्ट्स. हाँ, फाइंड C इक्विवेलेंट. Q रिलीज फ्रॉम द सेल, मतलब सेल से कितना रिलीज करेगा. And Q on each capacitor and B on each capacitor. C equivalent is 10 microfarads. Hmm. Q is 40 microfarad coulomb. Coulomb. Q is 20, 12, and 8. Hmm. And V is 4. 4. Yes, correct. You got us, subject. Tell me answers. 10 microfarad, 40 microcoulomb. 10 micro Yes, sir. farad units. इसलिए ऐसे एंजॉयमेंट ज्यादा हो गया तो ऐसे होगा. हाँ, 10 microfarads. हाँ, नेक्स्ट. 40 microcoulomb. Okay. Then I got something like 8, 12, and 20. What units rupees? हाँ, No, sir, microcoulomb. हाँ, माइक्रोकुलम. चार्ज का ही कुलम बोलने का, माइक्रोकुलम. हाँ, एंड वोल्टेज. Voltage is 4. हाँ, 4. चलो नाउ सी, आपको आइडेंटिफाई करने का सीरीज पैरेलल. एग्जैक्टली सीरीज में आपको चार्ज सेम आपको पास करना पड़ेगा, लेकिन नो यू हैव टू चेक चार्ज. यू हैव टू पुट एंड यू हैव टू चेक वेदर द चार्ज इज सेम और नॉट बोल के. एंड पैरेलल में हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल, हाउ टू आइडेंटिफाई पैरेलल. एनीथिंग बाय सीरीज यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई बाय पासिंग द चार्ज. पैरेलल में आपको क्या करने का, सिंपली आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा. See, they will not give voltage same or not same, we don't know, but physically आपको चेक करना पड़ेगा. देखो, this capacitor has 2 hands, this capacitor has 2 hands exactly connected. This is parallel. Okay, so I have 2 hands, my friend has 2 hands, मैं पकड़ूंगा, that is parallel. बीच में there should not be any capacitor. If there is a capacitor, these two are not in parallel. Okay, so वो प्रॉपर में चेक करने का कभी भी पैरेलल सीरीज. आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशन में दिया तो यू हैव टू स्लोली स्लोली रिड्यूस करके यू हैव टू फॉर्म द इक्वेशन. ओके, चलो क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करेंगे. चलो, फाइंड द सी इक्विवेलेंट अक्रॉस द पॉइंट्स ए एंड बी. ड्रॉ कर लो. नाइन माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 9 6 9 9 9 9, all are microfarads. This is A and B. I want C equivalent across the points A and B. They will give the terminals. They will tell across these points. Across these points means indirectly what is the meaning? We have to connect a imaginary battery. Imaginary battery. Okay, across these points we have to find the C equivalent. Now you have to identify which is series, which is parallel, क्या है कैसा है. 9 microfarad, 6 microfarad, 9 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
Options I'll give. So series पहला identify हुआ कुछ? Is the answer 3? अरे वाह, very good. Correct. Which is series? Which is parallel? So the one in 9 is series. 9. This one, huh? The last one, yeah, 999. Good. Yes, good. So देखो चार्ज पास करो, चार्ज पास करके चेक करो कि whether the series है. देखो the 3 are in series. So what is C equivalent series का? 1 by C equivalent is equal to 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9. उल्टा करने का कितना है सात्विक? 9 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9 is how much? 3. 3. Now 3 and 6 are in Parallel. so कितना होगा? 9. 9. Again 9 9 9 3. 3. 3 and 6 are parallel. 9. Again 9 9 9 3 colors. Okay, देखो. Okay, next. Find the C equivalent between the points A and B. A and B, C equivalent. This also easy one, करो. Between the points A and B means connect an imaginary battery. Otherwise, sometimes series parallel में डाल देगा. That's why imaginary battery connect करो. And then across these points, we want to find the C equivalent. Always come from backside. If कभी भी. Is it 5 microfarads? Yes, correct. 5 microfarad. सात्विक क्या? 5. पूरा आया? Okay. चलो. Now JEE mains question करो. In a given circuit, the charge on 4 microfarad. इसके ऊपर charge is how much? Sir, option A, 5.4. 5.4 option A. charge on 4 microfarads, right? No, wrong. Plus.
13 point, no, कितना? 1 second. Uh, 13.4 microcoulomb. श्योर पक्का? Yeah. ओके, देखेंगे कितना क्या रंग. जेई मेंस क्वेश्चन. Sati, can you try? I want charge on that capacitor. देखो, this is plus, this 10 volts, this is 0 volts, right? So wire में I told you potential is same, 10 10 10 10 10 and इधर भी 10 है. इधर तो 10 नहीं है because capacitor आ गया. Similarly 0 0 0 0 0 0. So what is the potential difference across this branch is 10 volts, right? What is C equivalent? Find करो. C equivalent is how much? 1 and 5 are parallel. 6 into series and 6 and 4 series, right? So what is 24 by 10? 2.4, right? So मतलब आपको क्या है इधर 2.4 microfarads, 10 volts, 0 volts, and charge. We have to find in this branch. में charge find करो. This is capacitance and C equal to Q by V. Q is equal to CV, right? So कितना होगा? 2.4 into 10. 24 microcoulomb charge. So इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 24 microcoulomb. इधर आकर इधर स्प्रेड हो जाएगा. Again it will come 24 microcoulomb, right? But he's asking इसमें charge only. इसमें charge is 24 microcoulomb. So answer is D. Okay. चलो. पता है ना? So circuits very simple. Compulsory one question will be coming every paper में. उसमें आइडेंटिफाई करके which type करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा. चलो नेक्स्ट वन और भी थोड़ा हार्ड है. In a figure shown below, the charge on the left plate of 10 microfarads is minus 30 microcoulomb. This is a left plate. इसमें कितना चार्ज है इस प्लेट के ऊपर? minus 30 microcoulomb. मतलब राइट साइड प्लेट विल बी हाउ मच? प्लस 30 microcoulomb. इधर तक तो मालूम है. The charge on the right plate of the 6 microfarad capacitor is. इस राइट प्लेट का चार्ज इज हाउ मच? तो प्लेट्स का कहानी है. दिस आल्सो जेईई मेंस ओनली. So all concepts you have to know. So plus 18 microcoulomb. Why plus 18 microcoulomb? Plus V is 3 and V is 3. V किधर नहीं दिया ना? No. छुएंगे. हेलो. यस. देखेंगे. देखो नया कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करो इसका क्या कहानी. देखो एक प्लेट्स का कहानी है ना, प्लेट्स का. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन. मान लो इसके ऊपर चार्ज कौन सा? लेफ्ट साइड का प्लेट का चार्ज इज x एंड लेफ्ट साइड का प्लेट का चार्ज इज y. ओके. एंड ये तो 30 है. इफ यू सी केयरफुली these plates are isolated plates. Starting derivation में I made isolated मतलब these plates are not connected with any battery or something. ये तीनों separate वाला एयर कैपेसिटर्स है ना. ये वाला आप 3 are isolated. Isolated में always total charge of an isolated plate is 0. Always isolated plates का total charge is 0. That means
x plus y plus 30 is equal to 0. So here two variables are there. आपको two equations are important. So आपको दूसरा equation किधर से लेके आएंगे? देखो these two are parallel, right? These two are parallel. I can tell like this: potential on 6 microfarad is equal to potential on 4 microfarads, because parallel में potential is same. And what is the formula? C equal to Q by V, V equal to Q by C. इधर Q कितना है? X by 6 is equal to, इधर चार्ज कितना है? Y by 4. So कितना? 6. So Y is equal to, I can write as 2 by 3x. Y equal to 2 by 3x. Now substitute this value in this. So x plus 2 by 3x. Because आपको x आ गया तो उसका opposite plate will be the plate, right? Charge, right? उसका plus 30 is equal to 0. So कितना होगा? 3x 5x plus 90 is equal to 0. So x is equal to minus 18 microcoulomb. This is minus 18 microcoulomb, means this will be plus 18 microcoulombs. So this is the answer. Plus 18. ఇది ఆన్సర్ రైట్ అవుతుంది नहीं होगा, आप 5 मार्क्स जाएगा, रैंक निकल जाएगा. असल असल जेई मेंस में असल पीपल थिंकिंग दैट इजी है, मतलब आ जाएगा बोलते 98% आए तो भी नहीं आएगा. 98% also who is getting seat computer science or something आने के लिए, some you know chemical engineering or something नया ऐसा में आ रहा है. तो दैट्स व्हाई आपको 99 टच करना पड़ेगा. 99 टच किया तो दे विल बी इन सेफ जोन, बिकॉज स्टार्टिंग पीपल विल गो टू द एडवांस, राइट? एडवांस में सम आईआईटी पीपल उसमें खाली हो जाएगा. सो सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में एनआईटीज में आ जाएगा. सो दैट इज अ थिंग. सो 99 91 92 तो सल वेस्ट है. ये तो नाम के बस बोलने के लिए 92% अच्छा रहेगा, रैंक देखे तो सम लैक्स में रहेगा. सो इट शुड बी 99 परसेंटाइल. ओके. एंड एवरी ईयर 99 परसेंटाइल मींस अप्रॉक्सिमेटली कितना मार्क्स आने का आउट ऑफ 300? आउट ऑफ 300 मार्क्स कितना है अप्रॉक्सिमेटली अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च? सादिक, 99 परसेंटाइल मींस अकॉर्डिंग टू योर 240 या 270. 240 270 पेपर में आएगा. पेपर में फोटो आएगा, उसमें 99 थोड़ी ना, उसमें ज्यादा आएगा स्टेट रैंक. बट जनरली अराउंड 200. सो 100 मार्क्स जाते भी अराउंड 200 आए तो अभी यू विल मीन ए सेफ जोन. 99 पक्का आ रहा है. एवरी ईयर 190 196 197 है तो भी 98 ऐसा आ रहा है. 200 एबो है तो अच्छा है. सो ऑलवेज ट्राई टू डोंट, मतलब सी 200 एबो मींस ईच सब्जेक्ट कितना होगा अप्रॉक्सिमेटली? सपोज ईच सब्जेक्ट, सपोज आउट ऑफ 25 ईच सब्जेक्ट 20 20 20 किया तो भी यू विल बी ए स्टेट रैंकर. 20 क्वेश्चंस पक्का करने का. दैट्स व्हाई ज्यादा गेस मत करो. कब गेस करने का? ओनली 50-50 चांसेस इफ यू नो, देन ठीक है, रिस्क लेंगे. दैट टू ऑल किया है एक छोड़ेंगे बोलते छोड़ सकते हैं. कुछ भी नहीं किया, गेस भी नहीं करूंगा ना, मैं पूरा 0 दूंगा बोलते प्रॉब्लम हो जाएगा. थोड़ा तो गेस करना पड़ेगा, राइट? सो उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व. ओके, चलो नेक्स्ट. नाउ टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स आर देयर. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस विल सी. फर्स्ट वन, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम्स बोलते हैं. देखो, similarly find the equivalent capacitance between A and B. A and B, C. Exam में numbers देगा, but we'll see through variables so that easy for us calculate. Method understand करने का. Now tell me, this is a wire connection problem. There are series are parallel or not anything now. कैसे पता लगेगा? ये वायर नहीं दिया तो सीरीज बोलते हैं. ना वायर दिया है समथिंग, क्या करेंगे? ओके, these are called as wire connection problems. Okay, wire connection problem में अंडरस्टैंड करो कैसे सॉल्व करें. एक बोलूंगा, यू कैन सॉल्व फ्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चंस के. देखो, सो आई टोल्ड यू वायर में पोटेंशियल इज सेम. दिस इज ए पोटेंशियल, दिस आल्सो ए. ओके, ए राइट, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ. सिमिलरली दिस इज बी,
This is B, and B, 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 B. So totally, how many potentials you have in the circuit? Mein? How many potentials? Two potentials only, A and B, right? So A and B. A and B के बीच में one capacitor, A and B के बीच में one capacitor C, right? This one done. A and B के बीच में one capacitor. Next, B and A के बीच में one more capacitor. B and A के बीच में one more capacitor C, right? This is also done. Again, A and B के बीच में one more capacitor. Again, A and B के बीच में one more capacitor. Because potential difference is same, right? This is also done. मतलब indirectly these three capacitors are in parallel. So C equivalent is ऐड करें तो प्लीज खत्म. So why connection problem बोलते हैं कब जाने का? Whenever you don't able to identify series or parallel, then slowly types में check करना पड़ेगा which type it belongs to बोल के. तो करो. कब बेटा? चलो. Find the equivalent capacitance across A and B. ड्रॉ करो. So here A, this is B. Or C, 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 C. So here we did not know the which is series, which is parallel, right? So first step minimum तो potential distribute करके check करना पड़ेगा. That is the thing we have to know. So potential distribute करो. So this is A. This is also A. And A. Whether this is A here, this is A here. No, बीच में कैपेसिटर आ गया. बीच में रेसिस्टर, इंडक्टर कुछ भी नहीं आने का. रेसिस्टर कुछ भी नहीं आने का. Then only the potential, otherwise potential will not come to here. Now B का check करो. B वायर में, प्लेन वायर में potential is same. B and this also B. Again B cannot come here because बीच में कैपेसिटर is there. Okay. Now here potential बाकी है क्या ना? इधर potential लगाना पड़ेगा कुछ तो potential. So मान लो X. अगर दूसरा है तो Y लगाएंगे ऐसा. Okay. Now totally how many potentials you got? Three potentials. A, X and B. So A, X and B. ऐसा सीरियल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं. समटाइम्स आपको चेंज करना पड़ेगा. क्वेश्चन में एक बार प्रॉब्लम हो तो ए बी एक्स लगा सकते हैं. पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल तो लगाना पड़ेगा. ओके. नाउ ए एंड एक्स के बीच में वन कैपेसिटर सी. दिस इज डन. एक्स एंड ए के बीच में, एक्स एंड ए के बीच में वन कैपेसिटर सी. दिस आल्सो डन. एक्स एंड बी के बीच में सी. डन. एंड ए एंड बी के बीच में, A and B के बीच में one capacitor done. No, this is also done. Now all four capacitor came. Now find C equivalent across A and B. मतलब indirectly battery connected वाला. Now which is series, which is parallel? These two are parallel. Now find करो C equivalent. Tell me answer. Five C by 3. 5C by 3. Yes, correct. देख these two are parallel. दोनों series and आने के बाद parallel. हाँ. Okay. Now आप ही करो. Will not help. Find the equivalent capacitance across A and B.
ड्रॉ कर लो। ऑल और सी सी सी। Find C equivalent across NB, between NB. Hmm. 3C by 4, 4C by 3, 5C by 3, 3C by 5. देखो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज ए, दिस इज ए। नाउ दिस इज बी, और कुछ नहीं है। तो इधर लगाना पड़ेगा पोटेंशियल, एक्स लगा रहे हैं। तो एक्स, एक्स, here also x, and x, here also x. खत्म, everything done, right? Potentials. Now how many potentials? We got 3 potentials only. So A, between 4 and 5? answer we got how much? No. I'm asking between 4 and 5, won't there be another potential? No. देखो, that one we'll talk. ओ x b। देखो a and x के बीच में 1 कैपेसिटर, डन। x and a के बीच में 1 कैपेसिटर, डन। a and x के बीच में 1 more कैपेसिटर, डन। ओके, नाउ x and x के बीच में, x and x के बीच में we should not put, because potential difference is 0. Whenever potential difference between the two capacitors is 0, there is no charge, only उसका कुछ काम नहीं है. We should not put, we should neglect this one. Neglect. 3C by 4. हाँ, answer is 3C by 4. yes. क्यों सर्च किया? No, sir. No, I no. was. This is 4 and 5 only. Okay. x and b के बीच में 1 कैपेसिटर, खत्म, खलास. So 3c, c are in series, so 3c square by 4c. 3c by 4 is answer. Answered. So whenever potential difference is 0, we cannot take that capacitors. Okay. So ये सब कुछ क्या आएगा मालूम है? Whenever you're doing the questions, उसमें conclusions will be coming. So practice more and more questions. थोड़ा practice में कम कर रहे हैं, that's why marks test में थोड़ा marks कम आ रहे हैं. Practice में one book only follow करो. Do all the questions sincerely. मतलब वो questions कैसे रहने का? Any question if you give that in that book में, you should be answering. ऐसे करो. ओके, एंड पीवाईक्यू से ऑलरेडी प्लेस्ड, प्रॉपर्ली करो. कितना हो गया पूरा पीवाईक्यूज?
नो, इसलिए उसमें थोड़ा कम आएगा। तो सिंसियरली करने वाला, दिस ईयर स्टूडेंट्स गॉट रेगुलरली कंपलसरी करके क्वेश्चंस करके कनीసం 1 बुक परफेक्ट हो गया, कोई भी क्वेश्चन उस बुक में पूछो आ जाएगा। ऐसा करने कनीసం पीवाईक्यूज, ये 100 क्वेश्चंस आर देयर, वो क्वेश्चंस कर लो अच्छे से हो जाएगा। चलो, टाइप 2, इनफाइनाइट कैपेसिटी नेटवर्क। इनफाइनाइट कैपेसिटी नेटवर्क, ये आई थिंक टुमारो क्या तो अच्छा है, ये लोग भी आएगा ना, दूसरे स्टूडेंट्स भी, नहीं तो समझ में ना आएगा उनको भी।